Very good morning. Welcome back once again to Unacademy. And you know very well what is Unacademy. It is India's largest online education portal. तो ये सभी लोगों का स्वागत है. A very warm welcome and yes, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को. So let's proceed with today's session. और आपको पता है सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो कि आप लोग कतई नहीं करते हैं, लेकिन हमारी तो बोलने की जिम्मेदारी है कि लाइक और शेयर का जो काम है ये आप ही का है. ये हम और जो अपने पड़ोसियों को तो बुलाएंगे नहीं कि भाई मेरे एक काम करो, तुम अपने पड़ोसियों को शेयर कर दो, तुम अपने पड़ोसियों को शेयर कर दो. ये काम तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ही करेंगे. तो ये काम थोड़ा सा कर लिया करो. राइट अप गाइस. सो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द वीडियो, ओके, शेयर इट एज वेल एंड यस सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल इफ यू हैवंट डन इट सो फार. राइट अप एवरीवन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू आल्सो जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. तो कहाँ है टेलीग्राम चैनल? ये रहा नाम, दैट इज PMUPSC10. और यही आपका प्रोमो कोड भी रहेगा. ओके, दैट इज PMUPSC10 इज गोइंग टू बी योर प्रोमो कोड विद रिगार्ड टू योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, सो जो गंगाधर है वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है. बोलने का क्या मतलब है? द प्रोमो कोड इज इक्वल टू द टेलीग्राम चैनल and the telegram channel is equal to the promo code that you are going to use while taking on the Unacademy Plus subscription. और guys, मैंने हमेशा से बोला है यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो यूपीएससी वाला प्रोमो कोड रखना पड़ेगा. ठीक, तो ये रहा वो यूपीएससी वाला promo code. So just guys, please remember, nothing to fear. We are here with you. Okay, and let's proceed with the facts for the day. Okay, am I clearly visible guys? सब कर दिया भैया. Thank you so much. Good morning PC, good morning Parul, good morning Dada. Yes, Sheetal, very good morning. Good morning Leba. Okay, yes, Kia, very good morning. Thank you so much for the warm wishes. Okay, Jai Hind sir, Hind, Jai Hind. अभिजीत मेरे भाई, गुड मॉर्निंग. ओके, तो चलिए देखते हैं हमारी जो आज की जो टॉप हेडलाइंस हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं. सो द फर्स्ट वन फॉर द डे व्हाट वी हैव गॉट, दैट इज विथ रिगार्ड टू अ क्वेश्चन, okay, on the MPs and MLAs and on their conviction and their status, okay, or that is on their post or on their designation. So are you willing to ban convicted politicians from contesting elections for life? The Supreme Court has asked the center, okay, that are you willing to do this or not? So guys, please understand, a petition was filed by an advocate known as Ashwini Kumar Upadhyay. Okay, one of the very famous personalities. He is always active with regard to the PILs and these kind of petitions and all. Okay, who argued that convicted MPs and MLAs should be treated like bureaucrats. Yes, absolutely. क्यों? Because एक बार किसी ब्यूरोक्रेट पर अगर कन्विक्शन हो जाता है, so that bureaucrat is considered now debarred. Like totally the bureaucrat is considered now not so much eligible, not so eligible with regard to the further services. राइट. सो उसी तरीके से यहां पर भी यही बोला गया कि अगर किसी एक एमपी या एमएलए का कन्विक्शन हो जाता है तो क्या अब उसको लाइफ टाइम बैन नहीं कर देना चाहिए एमपी और एमएलए बनने से? सो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं? तो इसी के ऊपर जो एक सवाल आया. सवाल कहां आया? सुप्रीम कोर्ट में. ओके, एक पिटीशन के थ्रू. सो अ पर्सन, अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बिकम अ इवन क्लर्क. ओके, यहां पर क्या बोला गया देखिए, अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट इवन बिकम अ क्लर्क बट कैन बिकम अ मिनिस्टर. Okay, so this was a argument given by the advocate sahab. Okay, and yes, a very perfect argument guys. Come on, you can see this thing. Okay, a convicted person cannot become a clerk in India. Okay, but yes, the very same convicted person can become a legislator in India. So this is not a joke. If legislation is joke, then it's fine. ठीक है, अगर मैं वहां पे जज साहब के सामने होता ना तो मैं यही बात बोलता कि इफ लेजिस्लेशन इज अ जोक देन इट्स फाइन, वी वोंट टेक इट सीरियसली, फिर कोई भी करे. बट इफ लेजिस्लेशन इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ द सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट, व्हिच इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ द सोसाइटी, देन वी आर सॉरी टू से दैट वी आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक. ओके, कि अगर लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाना एक मजाक है तो ठीक है, चलता है, कोई भी करे, नो वरीज एट ऑल. लेकिन अगर यही कानून समाज और सभ्य समाज, जन कल्याणकारी समाज का अगर नींव है उसकी जो है एग्जिस्टेंस, उसका वजूद निर्धारित करता है, तब तो फिर ऑब्वियसली ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है. ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanna has asked the additional solicitor general, okay, what the government's view on the matter was. Are you willing to ban politicians who got convicted from contesting elections? Mr. Chief Justice asked, and the lawyer said, okay, that is the additional solicitor general, he has stated that we'll have to consult the center about this. Okay,
आई नीड टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑफ हैंड। मतलब इमीडिएटली वहां पे जो है हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला कि जज साहब मुझे वक्त दीजिए। ओके, कोर्ट के हालात कुछ ऐसे थे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे एस वी राजू साहब, उनसे पूछा रमन्ना साहब ने कि भाई आप सॉलिसिटर जनरल हैं, जवाब दीजिए, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर। तब उस पर एस वी राजू साहब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि सर अभी इमीडिएटली कोई भी जवाब देना सही नहीं होगा। और बात बिल्कुल वाजिब भी है, लाजमी बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। तुरंत ऐसे इन क्विक शॉर्ट नोटिस एक सरकार का फैसला, ठीक है, तुरंत यही कोर्ट में नहीं सुनाया जा सकता, उनकी बातें अचानक से ऐसे नहीं की जा सकती। सो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर एस वी राजू हैज स्टेटेड दैट नो वरीज, आई विल बी टेकिंग ऑन दिस पॉइंट, टॉकिंग ऑन दिस पॉइंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड यस विल कम बैक to you as soon as possible. Okay, so obviously it's a kind of an answer which was needed at that time, because हम सीधे ये बात नहीं कह सकते कि अरे नहीं चलो हम कर देंगे, चलो बैन कर देंगे या नहीं बैन करेंगे। वी हैव टू कंसल्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बट यस अपार्ट फ्रॉम दैट द आर्ग्यूमेंट्स डन बाय द petitioner, okay, one of the senior lawyers, experienced ones, and yes the petition, okay, and the arguments was also clear that yes a person, a convicted person जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको आप क्लर्क तक नहीं बनने देते हो, बट उसको आप मिनिस्टर बना देते हो, राइट। सो अगर लेजिस्लेशन मजाक है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर लेजिस्लेशन मजाक है तब तो फिर ठीक है, चलता है। लेकिन अगर यही लेजिस्लेशन बोले तो कानून, ये बनाने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन, ओके, कानून बनाने की प्रक्रिया, अगर ये हमारे समाज, हमारे सभ्य समाज और हमारे जन कल्याणकारी यानी कि हमारे राम राज्य क्या नींव है, उसकी बुनियाद है, उसका ढांचा है, ओके, उसका वजूद निर्धारित करता है, वजूद तय करता है, तब तो फिर हमारे पास अब जो है एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ गया है कि हम अपने साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों होने दे रहे हैं। ओके, सो गाइस अब यहां पर जो है कुछ एक वो चीजें हैं जिस पर आप शायद अपनी नजर नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन अब मैं डालता हूं उस पर नजर। क्या सीन है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, so guys, if I go up with a question, what do you understand by the additional solicitor general of India? Okay, yes, good morning Shubham, good morning Sanjana, good morning। okay, ये क्या बात हुई, हाँ बात तो कुछ ऐसे ही हुई। ओके, यस संजना, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। टीना, वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, it's also the anniversary to the 26/11। okay, so guys on this though I very much opt not to talk on these points। अब चूंकि बात उठी है तो दूर तलक जाएगी, ओके, क्योंकि ये बातें करने से ना बहुत अच्छा फील नहीं होता, ये बातें करने से जो है बहुत तकलीफ भी पहुंचती है अगर सच बोला जाए तो, बिकॉज व्हाट लॉस इज एंड द काइंड ऑफ अ लॉस व्हाट वी हैव इनकर्ड ऑन द वेरी डे ऑफ 26/11/2008, मतलब आज से अगर हम बात करें 13 साल पहले, तो जो हमने देखा, काश आज भी एक उम्मीद होती है कि काश वो ना देखा होता, काश वो चीज़ें बदली जा सकती, काश घड़ी का कांटा हम इंसानों की काबिलियत के अंदर होता कि हम उसे पीछे घुमा सकते। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन डे तो है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे तो है, नो डाउट विद दैट, ओके, बट 26 नवंबर आज उसने 13 साल भी कर दिया है कंप्लीट हमारे 26/11 हमलों के लिए। और to the brave hearts from the Unacademy, from my side, I would just say a grand salute and really a thanks from the bottommost corner of the most pure feelings of our heart. That is, they gave up their life, they gave up their everything, and just they मतलब उनकी जो बोलते हैं ना, the body became mortal, the body is always mortal, but their sacrifice will remain immortal। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक खामटे, the three brave heart police officers of Mumbai, जिनके नाम से उस टाइम अंडरवर्ल्ड भी कांप रहा था, वी लॉस्ट देम। ओके, हवलदार तुकाराम साहब, वी लॉस्ट हिम, एंड many more hundreds and hundreds of people, they gave up their life, they have to give up their life, okay, in the attacks। but yes, अटैक्स में सिविलियंस तो गए ही गए, लेकिन अटैक्स में हमारे सुपर हीरोज को भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, उन्हें भी शहादत की जो एक शक्ल है उसको देखना पड़ा। ओके, सो बस सिंपल सी बात इतनी है कि काश वो नहीं हुआ होता, काश 26/11 को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर हम सेलिब्रेट कर पाते, लेकिन वो कहते हैं ना, नॉट एवरीथिंग गोज एज पर आवर विल। सो व्हेन नॉट एवरीथिंग गोज एज पर आवर विल, तो कोई बात नहीं, अब आगे की कहानी, आगे की दास्तान हम लिख देते हैं कि जब सब कुछ हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता, तो कोई बात नहीं,
हम अपने आप को नई उम्मीदों में तो ढाल सकते हैं ना, राइट। चलो माना वक्त हमारे हाथ में नहीं, कभी कभी हालात भी हमारे काबू में नहीं, लेकिन जज्बात तो हमारे काबू में होते हैं, राइट। तो जो बीत गई सो बात गई, जो आगे आने वाला जो ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम काम करते हैं। 26/11 हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो एक ब्लैक डे भी है, तो कोई बात नहीं, इसी 26/11 को हम आगे एक ऐतिहासिक दिन भी बना देंगे, है ना। सो दैट कि 26/11 के साथ अगर जो यादें जुड़ी रहें तो ठीक है, माना 26/11 ताज, मुंबई, सीएसटी, नरीमन हाउस, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, ठीक है, इन सबको तो हम नहीं भूल पाएंगे, बट यस एक और खुशमिजाज नज़ारा भी बना देंगे, सो दैट 26/11 की वो तकलीफें उस खुशमिजाज नज़ारे के सामने बहुत ही ज़्यादा जो है हमें अब ऐसा लगे कि ठीक है, वी हैव गेन्ड समथिंग, yes, we have done something for the nation, we have done something for the masses, and yes, we have done something for the families of those who gave up their lives, okay, in order to protect the India, the masses of India, the sovereignty and security of India. ओके सो गाइस, नो वरीज, चलिए आगे की कहानी तो हम बना ही लेंगे। ओके गाइस, ऑल क्लियर? द ग्रेट ब्रेव हार्ट पीपल, यस फॉर श्योर दे आर, कोई उनका तुलना ही नहीं है, उनकी जो है कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके सो दिस इज इट। ओके गाइस, सो दिस इज इट विद रिगार्ड टू द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, व्हाई इज सेंटर अगेंस्ट द लाइफ टाइम बैन? Okay, what is the actual problem with the center? Why they are not proceeding ahead with the lifetime ban? Okay, so the ministry had reasoned that MPs and MLAs were not bound by specific service conditions. Okay, अगर आप बात करोगे MPs और MLAs की, so they do not have any specific service conditions. They are bound by oath to serve citizen and country. उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक, they are just bound by oath to the service citizens, okay, to the service, okay, to serve the country and its masses, and they do not have got their service conditions, okay. They are bound by propriety, good conscience and the interest of the nation, that is all given to them by the oath, in the oath, okay, वो शपथ जो लेते हैं। So the Supreme Court in the PIL, the Public Interest Foundation case of 2019, said, though criminalization of politics is bitter manifest truth, which is a termite to the citadel of democracy, be that as it may, the court cannot make the law. ओके, अब गाइस ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ओके, और ये बहुत ही खूबसूरत सी बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही, ओके। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक शख्सियत के बारे में जिसका नाम है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द पर्सन, ओके। एसवी राजू साहब हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू डील विद द पर्सन एसवी राजू, मिस्टर एसवी राजू, बट आई एम गोइंग टू डील विद द डेजिग्नेशन, दैट इज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। So come on guys, tell me, is this post additional solicitor general, is it constitutional, or is it a non-constitutional body? Come on guys, additional solicitor general, is it constitutional post or is it a non-constitutional body? Quickly जल्दी बताओ, come on, quick and fast. No one, no answers yet. Come on guys, don't be so very weak in this points. We discuss constitutional bodies in our polity classes. Come on, दिल तोड़ रहे हैं आप लोग सवेरे सवेरे, ऐसा इना चलबे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 76, स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, फैंटास्टिक गाइस। किसी को तो जवाब पता नहीं है और कुछ लोगों ने कुछ तोड़ फोड़ के जवाब देना शुरू किया, ओके। किया, दैट इज यू आर राइट, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गाइस प्लीज रिमेंबर, only and only the Attorney General of India is constitutional under Article 76. Solicitor Generals, additional Solicitor Generals, they are not the constitutional bodies. Only Advocate General under Article 165 is the constitutional body, okay, and not the additional Advocate Generals and all. Please remember guys, only and only the Attorney General of India is constitutional, neither the Solicitor General। तो जब Solicitor General ही constitutional नहीं है तो फिर additional Solicitor General constitutional कैसे होंगे? Okay, please do make this point very clear. They are non-constitutional bodies, okay. Additional Solicitor General या Solicitor General या whatever apart from the Attorney General will be, it will be the non-constitutional. The Constitution only talks about the Attorney General of India and Advocate General of the states.
That's it, nothing more or less than that. Okay, so please make note of it very clearly. Solicitor generals are not constitutional. Okay, so now coming back to this next particular paragraph guys. Paragraph ये जो है कायदे से देखना, ये आपका एस्से का बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है, अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ योर एस्से. ओके, देखो क्या बोला यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट ने केस हुआ था द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2019. ओके, क्या केस था? पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2019. ठीक, सेड, देखो ये स्टेटमेंट लिख लो कायदे से डबल इन्वर्टेड कॉमास में. दो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रुथ, है ना. सो ये जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके अंदर जब क्रिमिनल्स बैठ जाते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है. ओके, जब इसके अंदर आपराधिक ये मानसिकता के लोग बैठ जाते हैं. ओके, तो हाँ, ये एक बहुत ही कड़वा सच है. इट्स अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रुथ. यस, कि हमारी राजनीति के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपराधिक मानसिकता के हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं. ठीक है, सो जो हमारी राजनीति है उसका बहुत ही ज्यादा एक उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन का. ओके, विच इज अ बिटर ट्रुथ. सच तो सच है, मीठा हो कड़वा हो पॉइंट हो ना हो व्हाटएवर. ओके, इट्स अ बिटर ट्रुथ. ओके, क्या बोला यहाँ पे? विच इज अ टर्माइट टू द साइटेडल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारी जो लोकतंत्र है, साइटेडल बोले तो किला, लोकतंत्र के किला, उसके मेंशन के लिए दीमक है. टर्माइट बोले तो दीमक. ओके, विच इज अ टर्माइट टू द साइटेडल ऑफ डेमोक्रेसी. बी दैट एज इट मे, द कोर्ट कैन नॉट मेक द लॉ. चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट तो कानून बना नहीं सकता. राइट, कोर्ट तो कानून बना नहीं सकता. थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है. राइट, वी हैव गॉट थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जहां पर लेजिस्लेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी का एक ऑर्गन है. ओके, जिसको काम दिया गया है लॉ बनाने का. एग्जीक्यूटिव है जिसको काम दिया गया है लॉ इंप्लीमेंट करने का. और जुडिशियरी है जिसको काम दिया गया है लॉ को डिफेंड करने का और उसको इंटरप्रेट करने का. ठीक, सिंपल सी बात है. जुडिशियरी कानून बना नहीं सकती. दैट इज नॉट अंडर द पावर्स ऑफ द जुडिशियरी गिवन टू इट by the theory of checks and balance or the theory of separation of powers in the book written by Montesquieu, The Spirit of Laws. Okay, a French political philosopher. क्या नाम था? Montesquieu. क्या नाम था किताब का? Spirit of Laws. जहां पर ये बात बताई गई. कौन सी बात बताई गई? That is, what do you understand by okay the theory of separation of powers or the theory of checks and balance. तो वहां पे क्या बोला? Democracy, that is the लोकतंत्र, it has three organs. तीन अंग हैं इसके. लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशियरी न्यायपालिका. लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना. लेजिस्लेचर कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकता और इंप्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव का. और जुडिशरी का काम है कानून की व्याख्या करना और उसकी सुरक्षा करना. जुडिशरी कुछ भी हो जाए कानून बना नहीं सकती. तो बस यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में बोला कि भाई यस वी अंडरस्टैंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ बिटर मैनिफेस्ट ट्रुथ. कड़वा सच है ये. एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इज वर्किंग एज द termite to the citadel of democracy. Yes, it is, but at any cost we cannot make law. Okay, clear up guys? Understood? So this is what we have got here. Okay, so अब ये इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा एसे बन सकता है, बहुत ही प्यारा पॉइंट बन सकता है एसे को लेकर. ठीक है, क्या सीन है यहाँ पर? देखो क्या बोला है. Though criminalization of politics is a bitter manifest truth, ये पूरा स्टेटमेंट लिखो. Which is termite to the citadel of democracy, the court cannot make law. Justify the statement. लास्ट में लिख दो justify the statement. ओके, बस एक पॉइंट यहां पर एड ऑन कर दो. Justify the above statement. Clear everyone? Yes please. ओके, सो एक बहुत ही खूबसूरत सा ये पॉइंट बनेगा आपके लिए. बहुत ही खूबसूरत सी बातें जो है इसमें आप लिख सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं कितना बेहतरीन लिखते हो आप गाइस. ध्यान रखना, इट शुड बी अ टाइप ऑफ एन एसे. ओके, इट शुड बी टाइप ऑफ एन एसे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट थिंग. ओके, द नेक्स्ट हेडलाइन फॉर द डे, दैट इज हियर वी गो. आफ्टर फार्म लॉज, ट्रेड यूनियंस पुश फॉर रोल बैक ऑफ लेबर कोड.
okay, after the end of the farm laws, okay, after the government has announced that it's going to take back those three farm laws which has created too much of nuisance in the Indian politics and society with regard to the farmer agitation and all, okay, तो उनको वापस लेने की बात कर दी गई है. लेकिन अब यहाँ पर दूसरा एक केस निकल कर आ गया है, that is with regard to the trade union. Okay, now they are up to the question that please either implement those trade codes and all, or just cover it up, okay, or just end it up. So what we have here, okay, over a year since the parliament passed four labor codes, okay, over a year since the parliament passed four labor codes, the center is still in the process of notifying the rules to implement the laws and has not set a date for the rollout. Okay, कई साल बीत गए हैं. ओके, ओवर द इयर्स द पार्लियामेंट हैज पास्ड फोर लेबर कोड्स. कौन कौन से लेबर कोड्स हैं अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, डोंट वरी. बट स्टिल द सेंटर इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग द रूल्स टू इंप्लीमेंट द लॉज एंड हैज नॉट सेट अ डेट फॉर द रोल आउट. बोले तो रोल आउट, दैट इज द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन. Trade unions, however, have planned to intensify their agitation this week against the code in the wake of the government's decision to repeal the three farm laws. अब जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने बोला है कि यार ऐसा है कि हम अब इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें अब इसके अगेंस्ट अपने आवाज. Okay, now I guess it should be fine. I guess it should be fine now. Okay. So guys, let's proceed. Sorry for the inconvenience. Load shedding की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी. Okay, so I guess guys now it's not on mute. Okay, बफ नहीं होगा. अभी मैं ऑनलाइन हूँ. Okay, can I have the confirmation with all of you? अभी तो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको. यस, आवाज भी आ रही है. ओके फाइन, थैंक यू सो मच. ओके, सो गाइस, आफ्टर द फार्म लॉज ट्रेड यूनियंस नाउ पुश बैक फॉर द रोल बैक ऑफ लेबर कोड्स. ओके, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. सो व्हाट वी हैव गॉट हियर. Okay, over a year, okay, over a year since parliament passed four labor codes, okay, the center is still in the process of notifying the rules to implement the laws and has not set, okay guys, please remember, and has not yet set a date for the rollout. Okay, so trade unions ने अब इसके ऊपर अपना थोड़ा सा जो है गुस्सा जाहिर किया है. That is, the parliament has already passed all the four codes. Okay, it has got the president's assent as well, but it's still okay, still it is yet to be implemented. तो लेजिस्लेचर से लॉ तो पास हो चुका है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी सवालों के कटघरे में आके खड़ा हुआ है. ओके, सो द न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस कंसोलिडेट्स 44 लेबर लॉज, ओके, अंडर 4 कैटेगरीज. ओके गाइस, कितने नए लेबर लॉज हम लेकर आ रहे हैं? 44 लेबर लॉज हम लेकर आ रहे हैं, जिनके कैटेगरीज हैं कितने? 4, जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो दे आर वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग conditions code, and the industrial relations code. Okay, so guys, these are the codes that are subdivided under those 44 labor laws. Okay, so guys, please remember the wage code, that is the social security code and all, occupational safety, health and working, conditions code, and the industrial relations code. So these are all those 4 categories through which, okay, new 44 laws for the sake of the trade and the labor, the trade union, sorry, that not the trade, for the sake of labor, okay, labor laws has been implemented. So the code on wages 2019, देखो कौन कौन से जो specific जो codes हैं हमारे पास जिन्हें हमें ध्यान में रखना है. That is the code on wages 2019, applying to all the employees in organized as well as unorganized sectors. Guys, please figure out this thing. Okay, the code on wages, क्या है? Code on wages applying to all the employees in organized as well as unorganized sectors, aims to regulate wage and bonus. ठीक, so the code on wages, so okay, for the sake of the labors, for which organization? Organized as well as unorganized, for the both. Okay,
The code on occupational safety. So the next one being the code on occupational safety, health and working conditions 2020. Okay, seeks to regulate the health, safety conditions and workers in the establishment within 10 or more workers. ओके एंड इन ऑल माइंस एंड डॉक्स. तो आपको याद होगा, अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, दैट इज विथ रिगार्ड टू द रिपोर्ट. ओके, विच रिपोर्ट इट वाज? एएफआर रिपोर्ट, रिमेंबर एएफईआर रिपोर्ट, देन अकिद करके एक रिपोर्ट आई थी. ओके, अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था 10 या 10 से ज्यादा के वर्कर्स, 10 या 10 से कम के वर्कर्स, सबको लेकर. ओके, सो द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ओके, देन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. Then last one, the code on industrial relations. So guys, please remember, all of these codes are applied? No, not yet. All of these codes are created? Yes. तो लेजिस्लेचर ने क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है एग्जीक्यूटिव ने. इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी भी सरकारी निर्देश, सरकारी आदेशों का जो है हम इंतजार कर रहे हैं. ओके, सॉर्टेड अप गाइस. सो ये है आगे की बातें. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज नेशनल Family Health Survey. Okay, so the next point is with regard to the National Family Health Survey. Okay, इसका 5th एडिशन अभी निकाला गया है, और इस 5th एडिशन के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई हैं आइए देखते हैं. So hypertension among the adults highest in Sikkim. Okay, when we talk about the National Family Health Survey, so the hypertension among adults highest in Sikkim according to the National Family Health Survey. Okay, hypertension की कहानी सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे पास, किस स्टेट में? हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सिक्किम स्टेट में. ओके, there is a considerable variation across the states and UTs in the prevalence of both high or very high random blood glucose levels and hypertension among the women as well as men, the experts said in the National Family Health Survey. Okay, बताया जा रहा है कि भाई मामला बहुत अच्छा नहीं चल रहा है हमारा, राइट? इट्स लाइक गोइंग अहेड in very not so decent manner with regard to the hypertension in India, with regard to the blood pressure, means like tension और stress वाला जो मामला है हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. Okay, so hypertension among adults highest where? In Sikkim. सबसे ज्यादा रेट्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? सिक्किम. Then across most states and union territories, at least 1/5 of the women and men suffer from hypertension. Okay, at least 1/5 of the men and women suffer from the hypertension, the National Health Survey 2019-20 found. The numbers are highest among the adults in Sikkim, with 35% of women and 42% of men having elevated blood pressure levels. So there is a considerable variation across the states, UTs, in prevalence of both high or very high random blood pressure and all. Okay, so कहने का मतलब है, we need to act with regard to the hypertension. Okay, we need to act, okay, regarding the hypertension issues in India. That means it is somewhere asking us to increase the life expectancy. Okay, first thing. And yes, it is also asking us to ease of living. Okay, ease of living and thus human development index. तो multiple चीजों के ऊपर ये जो है हमारा एक फोकस दिखा रहा है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेगा ये, कि उसको बढ़ाएंगे तभी जो है टेंशन कम होगा, अच्छी लाइफ लोग जिएंगे. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ओके, इन सब के ऊपर भी ये फोकस रखेगा. ओके, सो गाइस इनडायरेक्ट अटेंशन होगा, ये इनडायरेक्ट फोकस होगा जो आपको यहां से निकालना है. सो किन किन चीजों पर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, एंड ईज ऑफ लिविंग. ये दो चीजें हैं जो ये सर्वे हमें इशारा कर रहा है कि हमें इन दो चीजों के ऊपर काम कर लेना चाहिए. ठीक, सो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स and the next one, the most important one, that is the human development index. ये दो चीजों की तरफ हमारा ये सर्वे जो है इशारा कर रहा है. Okay, when you talk about the National Family Health Survey, okay, so guys please figure out, so it is a large scale multi-round survey conducted in a representative sample of households throughout India. Okay, कहाँ पर हो रहा है ये? Throughout India. Guys please remember, National Family Health Survey, अब सीधे लिख दिया है national, तो कहाँ होगा ये? पैन इंडिया, होल इंडिया. ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें कोई एरिया, कोई लोकेशन छोड़ी जा रही है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर सर्वे किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज डन थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट इंडिया. ठीक, ऑल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हैव बीन कंडक्टेड अंडर द स्टेलवर्डशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, कौन कराता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? ओके, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके, इन कोलैबोरेशन विथ International Institute for Population Sciences, IIPS, Mumbai. Okay,
सो गाइस, दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसी के साथ साथ हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेज बेस्ड इन मुंबई। ठीक, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकालते हैं। ओके, सो NFHS 5 includes some new focal areas such as death registration, preschool education, expanded domains of child immunization, components of micronutrients to children, menstrual hygiene, expanded age ranges for measuring hypertension and diabetes among all aged 15 years and above. So guys, please pen down the new figures, the new measurements, okay, the new radars of the survey. Okay, the new radars of the survey, what are these? So which are expanded, which are now introduced for the first time in the National Family Health Survey version 5. सो कौन कौन से हैं ये? डेथ रजिस्ट्रेशन, जो कि इसके पहले वाले में नहीं होता था, ये पहली बार ही हुआ है। प्री स्कूल एजुकेशन, ओके, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ये पहले के उसमें नहीं होता था, ये अब होना शुरू हुआ है। ठीक, देन एक्सपेंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ओके, आपको याद होगा मिशन इंद्रधनुष, ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द चिल्ड्रन, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं पोषण अभियान, दैट इज विथ रिगार्ड टू द मिड डे मील स्कीम। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, expanded age ranges for measuring hypertension, diabetes and all, और एज ग्रुप क्या रखा गया? 15 साल से ऊपर। So very important aspects with regard to the prelims, very important points with regard to the prelims. So please keep your 100% attention. National Family Health Survey version 5 जो अभी निकल कर आया है, उसमें नई चीजें क्या ऐड ऑन करी गई हैं? That is the death registration, yes. First thing, pre-education, preschool education, yes for sure. ठीक है, the play schools and all. देन एक्सपेंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष, इन सब के बारे में बात की जा रही है। देन न्यूट्रिएंट्स टू द चिल्ड्रन, ओके, आपको याद ही होगा अभी हम बात कर रहे थे फोर्टिफाइड राइस एंड यूज ऑफ फाइबर, ओके, जूट, ये सब सॉरी फाइबर जो है, जितना ज्यादा फाइबर रिच फूड है उसको अपने मिड डे मील स्कीम में पोषण अभियान में डाल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, the menstrual hygiene and the hypertension blood pressure levels, all of these to be measured in the age group from 15 years and above. 15 साल से ऊपर के जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे, उन सब का यहाँ पर ये मेजरमेंट किया जाएगा। तो कौन कर रहा है ये, किसने किया ये सर्वे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS बेस्ड इन मुंबई। ओके, पहली बार में IPSC दिखा, जहन में जो होता है पहली और आखिरी बार में वही दिखता है। ठीक है, सो ओके सर, इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसीज एंड सोशियो इकोनॉमिक मेंटल एस्पेक्ट टू गेट रीड ऑफ हाइपरटेंशन। वेल yes, policies do create do make up a very vital role for sure, but yes, apart from that the social base also, ओके, हाँ, पॉलिसीज का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज का रोल है ये भी कह देना सही नहीं होगा, ओके, बिकॉज द सोशल बेस ऑफ द नेशन इट आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। ओके, सो क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट, every national family health survey NFHS has two specific goals to fulfill. ओके, जो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके दो मेजर गोल्स होते हैं। सो क्या है? पहला वाला, to provide essential data, okay, to provide essential data needed by the Ministry of Health and Family Welfare and other agencies for informed decision making and policy and program intervention purpose. Then to provide insight regarding important emerging health and family welfare issues. ठीक है, सो दो फैक्ट्स होंगे यहाँ पर जो कि हर एक फैमिली हेल्थ सर्वे निकालता है। कौन कौन सा? टू प्रोवाइड एसेंशियल डेटा needed by the ministry and family welfare, Ministry of Health and Family Welfare and other agencies for informed decision making and policy and program intervention purposes. मतलब कि schemes और policies बनाने के लिए ये एक बहुत ही important player है। ओके, तुम्हारी जितनी भी फैमिली से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम्स बन रही हैं वो किसके तहत बन रही हैं? किस सर्वे के तहत? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत। ठीक, एंड सेकेंडली, टू प्रोवाइड इंसाइट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज। तो जो इश्यूज भी हैं हेल्थ को लेकर और फैमिली को लेकर, ये उसको भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक, ओके, सो इट क्रिएट्स द बेस फॉर द पॉलिसीज एंड स्कीम्स। नाउ हमारे प्यारे पड़ोसी बहुत खुश हैं, बहुत मतलब एक इनके मन में एक खुशी की लहर जो है दौड़ रही है, अगर आप देख पा रहे हैं इनको। सो ही इज क्वाइट हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। अब क्यों हैप्पी हैं इतना, आइए बात करते हैं। बिकॉज ये चल दिए हैं अफगानिस्तान की तरफ, इनके और इनके कुछ बिजनेस
मैन है इन चाइना में रह रहे, ठीक है। तो ये चल दिए कहाँ, अफगानिस्तान की तरफ, और अफगानिस्तान में पहुंच रहे हैं किस लिए, लिथियम निकालने के लिए। ओके, सो चाइनीज कंपनीज हैव आईज ऑन अफगानिस्तान's lithium, the report stated. Okay, so the political situation, security, economy and infrastructure have been cited as major risks and challenges for Chinese companies to invest in. Chinese companies have shown interest to invest in Afghanistan's lithium mines, according to the Global Times reports. Some Chinese businessmen arrived in Afghanistan on Tuesday, that is November 23, and they are now surveying the exact location of potential lithium mines inside the country, the Global Times recently reported. Okay, क्या सीन है यहां पर इनका, क्या बोल रहे हैं ये, अफगानिस्तान में एंट्री मार चुके हैं, ठीक है। कौन, चाइनीज फर्म्स, गवर्नमेंट तो वहां पे एंट्री मारी रही थी, चाइनीज फर्म्स भी वहां एंट्री मार गई है। क्या कर रही है चाइनीज फर्म्स वहां पर, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो लिथियम माइनिंग का कहानी उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको याद होगा आज से करीब 25 दिन 30 दिन पहले हमने एक सेशन किया था विथ रिगार्ड टू द चाइना एंड अफगानिस्तान। ओके, विथ रिगार्ड टू द चाइना एंड अफगानिस्तान, किसी के पास उस सेशन का लिंक है तो प्लीज जरा यहां पर भी पेस्ट कर दें और कमेंट बॉक्स में भी पेस्ट कर दें, और वो सेशन आप लोग एक बार जरूर देख लें जिन जिन लोगों ने भी वो सेशन नहीं देखा है, ठीक है। आई अश्योर यू समथिंग, उस एक सेशन के बाद चाइना का अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Why China is too much interested in the politics of Afghanistan, everything will be decoded through that one session. आपको फिर और कुछ कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, ये नहीं सुधरेंगे, सुधरना ये चाहते भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई ट्रेड वॉर चल रहा है, एक इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर हमने शुरू ही कर दिया है दुनिया भर में। देखो दुनिया जो है फिलहाल, फिर से मुझे ऐसा पर्सनली, मैं एक बात बता रहा हूं, with regard to my own IR intellect, what I have gained so far with the subject, with regard to my own research and analysis, what the conclusion I have come on to, okay, that is in this present scenario of 2021, the 21st century, okay, we are in a state of an indirect cold war again. यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से 90 तक, वो तो 90 में खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे, या अंदाजा लगा कर भी उस बात को एडमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हम एक कोल्ड वॉर सिचुएशन में हैं। हां बिल्कुल हैं हम, क्योंकि उस वक्त तो दो ही कंट्रीज थी जिसको हम कह रहे थे कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, यूएस और यूएसएसआर। यस, बट व्हाट द हेल इज हैपनिंग राइट नाउ? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, रशिया यूएस, यूएस नॉर्थ कोरिया, यूएस चाइना, चाइना with the rest of the world, okay, US with some other African nations, the Middle East, the terrorist crisis and all, the crude oil conspiracies, okay, the terrorist organizations covering up the whole of the crude oil areas of Syria and Libya, okay, the problem, the still problem going on in Kenya and Somalia, problem with regard to Sudan, Eritrea, Ethiopia, okay, with regard to the TPKF, okay, TPLF, Tigray People's Liberation Front, and what's going on in Dubai, what's going on in the whole of the Middle East after the Arab Spring. हम इस बात के ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे कि दूसरा कोल्ड वॉर तो दुनिया भर को जकड़ा हुआ है, पहला वाला कोल्ड वॉर तो बहुत नॉर्मल था, राइट, यूएस और यूएसएसआर के बीच में बर्लिन वॉल गिरा, कहानी खत्म हुई, चेरनोबिल का इंसिडेंस हुआ, यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ, कोल्ड वॉर खत्म। यहां तो चचा माहौल और खराब है ना, दुनिया भर की सरकारें जो हैं आपस में एक दूसरे से तानातानी रखी हुई हैं, जो मनमुटाव है, खिंचाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। What's going on between US and North Korea? Isn't it not a cold war? Yes, it is. Isn't it because of all of these things, our safety and security is in question? Yes. US China for sure, trade war. India China, China and the South China Sea nations, right? Australia versus China these days, Japan versus China these days, Korea, North Korea versus rest of the world, US versus North Korea, US versus Russia, तमाम चीजें, और हम कहेंगे कि नहीं, we are living in the non cold war era. Point is, अब तो actual cold war शुरू हुआ है, okay, point is, अब तो actual cold war शुरू हुआ है, और हम कह रहे हैं कि we are in a non cold war era. Okay, so guys, this is something which is not given by any international organization, institution and all. This is something which is given by your IR expert. That's me. Yep, that's me for sure, right? Okay, so लिंक तो पेस्ट कर दिया है, नो वरीज देयर, आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कर देना। ओके, गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज वेयर वी आर इन द स्टेट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड नो वन इज रेडी टू एडमिट दैट, बट वी आर।
हम हैं, कोल्ड वॉर के सिचुएशन में हम हैं, बिल्कुल हैं. ओके, so what we are having right now, the Chinese companies, they have got eyes on Afghanistan's lithium. और जैसा कि मैंने बताया था आपको सेशन के अंदर, don't worry, I'll paste up the link after the class. Okay, that is what they are wanting. They are wanting, yes, for the exact business. They're wanting what? Just for the exact business of the minerals that are hidden inside the soil of Afghanistan. ओके, सो अगर आप बात करोगे इंडिया के अंदर विथ रिगार्ड टू, अब इसमें एक चीज आ गई थी विथ रिगार्ड टू द प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस. ओके, सो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, लिथियम इज कंसीडर्ड एज अ प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस, सॉरी. ओके, अगर आप बात करोगे इंडिया के अंदर, ओके, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इंडिया के अंदर लिथियम इज कंसीडर्ड एज द प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट of 1962. And what do you mean by the prescribed substance? Any substance, okay, any substance including any mineral which the central government may by notification prescribe, being a substance which in its opinion or may be used for the production or use of atomic energy. तो prescribed substance क्या है? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी सब्सटेंस को अगर बोल दिया है कि ये प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस है, तो वो प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस हो जाएगा. अब प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बोलेगी? वो जिससे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की जा सकती हो. एंड लिथियम इज वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस. एंड व्हाई आर यू गोइंग इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू एक्सकेवेट लिथियम? For sure you are going to make up the batteries only. Very good, if you are going to make up the batteries only, no worries with that. But what if you are going to create something very hazardous with that? That is the nuclear element for sure. Okay, जो आप बनाओगे ही. तो अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बनाओगे तो ठीक है, सॉरी, अगर सिर्फ और सिर्फ बैटरीज बनाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर भी उससे बनाओगे तो फिर उसके बाद से तो कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 में तो कन्वर्ट होगी ही ना. This is what I call it with all of these news, a new era of the world order, that is Cold War 2.0 it is. Okay, are we in the state of Cold War 2.0? Yes, we are. 110% we are in the state of Cold War. This is 2.0. Okay, बस बात इतनी है ना, दुनिया भर की सरकारें इसको एडमिट नहीं करेंगी until unless I publish a research paper. एक बार अफगानिस्तान टूर से लौट कर आऊं, फिर रिसर्च पेपर इस पर जरूर पब्लिश करूंगा. ओके, चलो, वही वाली बात है, तुम हो तुम्हें पता नहीं है पर तुम हो. एग्जैक्टली, तुम हो पर तुम्हें पता नहीं है पर तुम हो. ठीक है, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस कौन से हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे भी प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस कह देगी वो हो जाएगा. और गवर्नमेंट किससे बोलेगी प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस? जो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ड्यूट्रियम है और लिथियम भी आ गया. मतलब लास्ट में यूएम लगा है, ईयूएम. ओके, तो उससे न्यूक्लियर बनेगा ही. ओके, क्लियर गाइस? गुड मॉर्निंग उमंग. ओके, सबका 2.0 वर्जन आ रहा है, आने दो. ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, आ रहा है तो आने दो. ओके, कोई अब इसमें दोहराए तो है ही नहीं. अब इस बात को हम एडमिट करें या ना करें, कोल्ड वॉर तो देखो मैं बता रहा हूं. ठीक है, चल ही रहा है. सो गाइस, द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, दैट इज विथ रिगार्ड टू द अफ्रीकन स्वाइन फीवर. मतलब मर जाए क्या हम लोग? कभी कोरोना तो कभी ये तो कभी वो. अरे यार, एक बार में आओ, साफ ही कर दो, खत्म कर दो. अब दूसरे वाले आ गए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर. मतलब क्या लगा रहा है वियतनाम में? ठीक है, पूरा जो है देश दुनिया को कवर कर रखे हैं. ठीक है, राइट, लिटरली वेटिंग फॉर दैट. रुक जाओ. ठीक है, बताते हैं आप लोगों का, वेट ओवर करते हैं. ठीक है, क्या सीन है यहाँ पे? दूसरा वाला अभी हमने क्या देखा था? नोरो वायरस आया था. हाँ, एक अभी हमारे यहाँ केरला में. कोरोना तो खत्म हुआ ही नहीं अभी, ये तो जान का दुश्मन, एकदम पूरा जंजाल बिछा रखा है, जो तो अलग है. ठीक, अब उसके बाद से ये सारी चीजें कम थी, अब ये ले आए क्या? अफ्रीकन स्वाइन फीवर. कहां पर? वियतनाम में. मतलब हद ही मचा रखी है यार इन लोगों ने तो. मतलब मन करता ना कभी कभी जाए कहीं, इधर कुआं उधर खाएं, कहीं तो भी कूद के ना खत्म ही करो यार जिंदगी. क्या लगा रखा है? कभी नोरो वायरस से लड़ो, कभी स्वाइन फ्लू से लड़ो, अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया एक, कभी कोरोना से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं 2 साल से.
ठीक, उसके बाद से अभी मलेरिया डेंगू तो अभी छुप के बैठे हैं, अभी रुको कोरोना खत्म हो जाए तो आएंगे। हैं दुनिया जहां सारी बीमारियां जो है धरती पर लेकर घूम रहे हैं हम लोग, तो क्या करें, चल दे थैनोस के पास, या जादू बोले हैं कुछ, घुमाए बटन बटन दबाएं कंप्यूटर के, ओम 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 करके कुछ आवाज निकाली जाए। हाँ, लाइन लगाए बैठे हैं एक एक करके, सब वही वाली बात है। हाँ राइट, सब वही वाली बात है, लाइन लगा के रखे हैं एक एक करके। सो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, कहाँ इसने आतंक मचाया अभी, अफ्रीका, सॉरी वियतनाम में। ओके सो गाइस, अफ्रीकन स्वाइन फीवर spreading widely in Vietnam and is hurting the local farming industry, forcing the culling of 3 times the number of hogs culled last year. Culling बोले तो killing, okay, culling बोले तो killing of the animals, animal बोले तो the pigs, okay, इनको मारा जा रहा है, why? Because of spread of the African swine fever, ASF। अब बोलोगे सर दवाई नहीं है मारा क्यों जा रहा है, यस, दवाई नहीं है इसीलिए मारा जा रहा है। ठीक, so ASF is a highly contagious and fatal animal disease that infects domestic and wild pigs, typically resulting in an acute form of hemorrhagic fever. Okay, acute form of hemorrhagic fever. It was first detected in Africa in 1920, so that's why it's African swine fever. The mortality is close to 100%, मतलब अगर लगा तो गया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर लगा तो गया। एंड सिंस द फीवर हैज नो क्योर, अभी तक हम बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन है कि नहीं है, अभी तक अफ्रीकन स्वाइन फीवर की तो वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं बनी है। एंड ओनली वे टू स्टॉप इट्स स्प्रेडिंग इज बाय कलिंग द एनिमल्स, किलिंग ऑफ द एनिमल्स, और बाय अब जो है हम लोग क्या कर रहे थे, खुद को हम लोग जो है एक तरफा कर रहे थे, है ना, कोरोना वगैरह आया, कोविड वगैरह आया, तो सबसे पहले क्या बोले, क्वारंटाइन करो खुद को। तो यहाँ पर क्या सीन है, क्वारंटाइन एनिमल्स को भी किया जा रहा था, और अगर क्वारंटाइन से भी बात नहीं चल रही थी तो फिर इनको मार दिया जा रहा था। सो देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन एज वेल गाइस, प्लीज रिमेंबर, ना ही कोई दवाई है ना ही कोई वैक्सीन है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक, सो विच इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई एनिमल्स आर कल्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, कोरोना फैला है दुनिया में, दुआ करना आज ही जाकर तुरंत कि भैया अफ्रीकन स्वाइन फीवर ना फैल जाए। अभी वियतनाम में आतंक मचा रखा है, ठीक है, यहां से निकल के दूसरी जगह ना जाए। इट ओनली अफेक्ट्स एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस बोथ। ओके, सो गाइस प्लीज फिगर आउट दिस थिंग, क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, सो गाइस दैट्स इट विद द सेशन राइट नाउ। Okay, please remember the most wonderful slogan we got for you, Unacademy, let's crack it. Okay, so guys, next we are going to meet up when we are going to meet 11 a.m. in our ethics class. Okay, and what we are going to discuss today, Sir Syed Ahmed Khan. Another life-changing session for you is on board at 11 a.m. Guys, please join करना नहीं भूलना, कभी same channel when 11 a.m. कितने बजे, 11 a.m. एथिक्स की क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे हम, सर सैयद अहमद खान। ओके, टुडे राइट अप। एंड गाइस प्लीज रिमेंबर, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म कौन है वहां पे, बेस्ट एजुकेटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। Okay, so go ahead, go on for the subscription, right? Just use my promo code. Guys, ध्यान रखना है आपको, प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है PMUPSC10, okay? अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आते वक्त, चाहे प्लस ले रहे हो चाहे आइकॉनिक ले रहे हो, प्रोमो कोड आपके लिए यही रहेगा, दैट इज PMUPSC10। यूपीएससी क्वालिफाई करना है ना, तो यूपीएससी वाला प्रोमो कोड भी रखना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। ठीक, सो प्लस एंड आइकॉनिक, द टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो व्हाट इज देयर इन प्लस, best educators, live classes, structured course and PDFs, live tests and quizzes. So Iconic follows with these 4 things. Okay, it is common in all the plus as well as Iconic, but Iconic comes with 2 different aspects, that is your PC, bole to your personal coach, and your mains question answer writing practice. Okay, these are the 2 aspects. So with regard to the subscription plans for plus, we got 6, 12, 24 and 36 months. So the actual prices are here. But if you use my promo code, if nahi, you have to use the promo code, that is PMUPSC10, you get the flat 10% discount. Okay, so क्या रहेगा आपका 6, 12, 24 और 36 months के जो prices होंगे, that will be 36,450, 44,550, 64,000 and 81,000 rupees respectively. Iconic में भी same actual prices ये रहे यहाँ पर, okay, but once again apply the same promo code, 10% off again, and for 12, 24 and 36 months the prices will reduce down to 67,050 rupees, 1,04,175 rupees and 1,38,375 rupees. Okay, so guys, the fresh batches, they have commenced from 24th of November for 22 as well as 23 UPSC CSE exam.
Okay, so guys, thank you for joining me in here with the class. Okay, and you know very well what to do. आपको लाइक किए बिना नहीं जाना है सेशन को, ठीक है, शेयर भी करना है, व्यूज दिलाने का काम जो है आप ही का है, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आपके सामने है, प्रोमो कोड भी आपके सामने है, सो यू कैन जॉइन मी हियर, दिस इज द टेलीग्राम चैनल. जो भी इश्यूज हैं, दिक्कत परेशानी है, फॉर श्योर विद रिगार्ड टू योर सिलेबस, आई विल ट्राई माय बेस्ट to cover up as much as I can. Okay, so thank you guys, see you all soon, 11 a.m. sharp. Bye bye, take care, Jai Hind, Allah Hafiz.